न तुम हमें जाना, हम तुम्हें जाने। Hi, Tamil Info. Tamil Info. That's a nice name. Tamil is a nice language. Yeah. The reason why I like this language, Tamil, because I have no understanding of Tamil, but it sounds nice. Nice, nice, nice. Tamil is like Ratnagiri. Now, Malwani is like Kolkata language. Sweet, sweet, sweet. So Tamil is in the category of sweet language. So hi, yeah. Hi, how are you? A big fan of yours. See, Ujar is like, if I cut down everything and come to the point, never follow anyone. Yeah. Get inspired by everyone and be the source of inspiration for everyone, but never follow anyone. Yeah. Thanks, but I love you too, Ujar. I love you too, brother. Are waiting for anything? Not waiting. Yeah. Like that's a difficult question to understand without knowing much about you. So, madam, your way of talking is superb. Hey, thanks, sir. Thank you very much. There's no, we are the only animal on the planet Earth who is talking. All the animal on the planet Earth, they open their mouth only to eat. We open the mouth even to talk. Only animal. Only animal. Only animal. We are the only animal on the planet Earth who opens the mouth not only just to eat, even to talk. All other animals, they are opening their mouth only to eat. We talk. Mm, so we all have this opportunity of talking. So you guys can talk. Just put in the chat, and we can build a nice conversation on it. Nice question, but less than 7 words. The question has to be less than 7 words. Because if you cannot frame a question in less than 7 words, it means there's a lack of clarity here. So less than 7 words. Take your time. बट लेस देन 7 वर्ड अ नाइस क्वेश्चन आप हिंदी में भी बात कीजिए बहुत अच्छा लगता है आपको अरे मुझे मेरी हिंदी बहुत प्यारी है सर मैं जैसे कोई बोलता है हिंदी में बात करो मैं एकदम हिंदी में बात करना चालू कर देता हूँ और जैसे कोई बोलता है अंग्रेजी में बात करो अंग्रेजी में बात करना चालू कर देता हूँ आणि मैं मराठी में मुझे मराठी बड़ी प्यारी लगती है मराठी मैंने मेरे माँ से सीखी सर मराठी मेरे कॉलेज में नहीं मतलब स्कूल में नहीं था मैं केवी में था ना तो मैं मराठी सीखा नहीं है मैं मराठी मेरे माँ से सीखा जो भी सीखा मेरे माँ से सीखा मराठी में मेरी माँ जो लेटर लिखती थी अपने भाई को अशोक मामा को तो मैं वो लेटर पढ़ता था अशोक मामा जो लेटर लिखते थे मेरे माँ को मैं वो लेटर पढ़ता था तो मेरे मराठी की प्रैक्टिस हो जाती थी और मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं मराठी बोलता था मैं तो मराठी बोलता था तो ऐसे ही सो मराठी इज़ अ नाइस लैंग्वेज विच आई लर्न फ्रॉम माई मदर थैंक्स क्या सवाल है यार frame a nice question. I love questions, but 7 words. Nice question. And anything just because sleep is the concept. There's no other animal on the planet Earth. No other animal. No, no, no. No other animal on the planet Earth is sleeping the way we humans are sleeping. No. No other animal on the planet Earth is sleeping as deep as humans. No. Because I'm within my capacity, I'm trying to find that animal for last 4 years. Didn't find. I found many animals. Lost one. There's one big loss I had apart from various suggestions I was able to hand over last 4 years. मैंने जो
लास्ट 4 साल में बहुत चीज़ें छोड़ी हैं, बहुत चीज़ें छोड़ी हैं, मतलब सब कुछ छोड़ दिया मैंने। रोमांटिक रिलेशन छोड़ दिए सारे। अन्नों को नहीं छोड़ पाया बिकॉज 99.267 जीरो रहा माई सन गॉट 99.267 मुझे अमेन अभी एडवांस बाकी and few members in the family. Otherwise, I left everything, left it, and then restarted my life with fresh mind. So, बहुत अच्छे बोलते हो आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। वॉइस कम आ रही है। वॉइस ज़्यादा आने का एक ही तरीका है कि आई हैव टू टेक दिस। मेरा कोई फ़ोन नहीं है, सैमसंग गैलेक्सी 10। कई फ़ोन जो है मेरे लाइफ में मैंने तो तोड़े हैं। और मैंने मेरे बच्चे को फ़ोन दे दिया था एट द एज ऑफ समझ लो ना, व्हेन ही वाज 11 मैंने उसको आईफोन दे दिया था अर्नव को। लिए आईफोन देखे, ऐसा होता है आईफोन, रख ले आईफोन, देख ले क्या होता है आईफोन। एट द एज ऑफ 13 उसने मेरे को आईफोन वापस कर दिया और उसने मुझसे वो छोटा फ़ोन लिया नोकिया का। अभी मेरे बैग में फ़ोन है। और फिर वापस लिया उसने आईफोन, फिर यूज़ किया। अभी नहीं किया, अभी फ़ोन ही नहीं यूज़ करता वो, तो नोकिया वाला यूज़ करता है शायद अभी। ऐसा एट द एज ऑफ 9 डॉली ने उसको ट्रेन किया 10 किलोमीटर के लिए। एट द एज ऑफ 9 10 किलोमीटर के लिए ही रैन एट द एज ऑफ 9। एज ऑफ 13 में वो चला गया था HMR अकेला। ब्रिगू लेक किया उसने एज ऑफ 11। देन एज ऑफ 11 10 उसने सह्याद्री के 4 5 बड़े बड़े क्रॉस कर लिए थे। सही है बंदा, मसान 18 liberated physics is like 99.267 in JE, but he loves physics. So he will not be engineer. He wants to pursue physics. You are my inspiration, Praveen. Now I work in IT because of you. Thanks. Hey, thank you. Thanks for the kind words. बिजनौर की धरती से सलाम सलाम हो। Actually, your communication skill has inspired me. Of the best thing which I have learned in Himachal, I remember I was sitting in the mountain, or I was just sitting there, sitting there, and watching the moon and watching the moon and watching the moon. And the one girl came from behind, एक बंदी आई पीछे से, ऐसा से मुझको टैप किया ऐसा इस पे. And I said hi, and she said, "Can you teach me something new today? Can you teach me something new today?" मैं क्या पूछ लिया इस बंदे ने मेरे को ऐसा. तो it's like every time we have to learn new. And you learn new things only when you are moving in time and space here. I remember I was speaking to Arnav. Arnav is my son. And I remember calling him from the mountain. I was missing him and I said, hey. And I said, what's the time? And he said, this and that. And I said, hey, come on, yaar. I don't believe in all this. ये तो I surrendered the whole concept of time. मुझे नहीं पसंद आता time ये सब second ये सब. I don't want this now in my life. So he said, Dad, you have not surrendered the concept of time. You have just surrendered the unit of time. See, my son teaching me. Yeah. We learn. My son was what, 17. Those. So he said, Dad, you have surrendered the concept, the unit of time. The second and the minutes. The calendar is the unit of the time. To wear something. It's cold here now. It's the unit of the time. So when you move in time and space, you actually meet people, or you meet nature, or you meet something. Right? Something which is not created by human beings, something which has been created by the nature. And when you meet like this in the nature, then you learn. You learn from the nature. It's like that. Let me wear the jacket. तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया.
Sweetness hidden in your voice. It means I'm audible. I'm audible, right? It means अपनी फैमिली से भी मिलाइए सर. मेरे फैमिली में कोई रहा नहीं है यार. मेरी फैमिली में कोई रहा नहीं मतलब क्या है. लास्ट टाइम जब मैं मेरी पूरी फैमिली को एक साथ मिला था, एक साथ में मिला था उनसे मैं, तो मैंने यही कहा था जाते जाते उनको कि यार मैं निकल रहा हूँ एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट कि आप ये मत समझो कि मेरी लाइफ जो है इट्स लिमिटेड टू 7 to 8 पीपल इन माई लाइफ इन माई फैमिली. इसलिए मैंने पहले 32 बच्चे अडॉप्ट किए बॉक्सिंग के लिए ताकि मैं कुछ कर सकूं. मैंने किए नहीं, वो होते हुए वो होता रहा. कोई ऐसा प्लान करके करता नहीं है. तो ऐसा हुआ, मेरे देखा मैंने होते हुए कि आई एम अडॉप्टिंग किड्स एंड देन आई एम हेल्पिंग किड्स टू लर्न बॉक्सिंग एंड ऑल दिस. तो फैमिली में कोई है ही नहीं यार, सब फैमिली ही है और क्या. मतलब एक धनंजय तराची का बहुत प्यारा ये है. इन केस इफ यू हैव नॉट 1 minute, let me use the correct filter to correct the light of this. There's too much of light on my face, so let me use, yeah, black करेंगे. Yeah, black and white ही कर लेते हैं ना यार. Yeah. This is not. This is nice. Is this nice? Yeah. This is okay. This color is okay. Black and white. You have to watch me. I'm not watching myself. So is this okay? This filter okay? Huh, guys? This filter okay? Actually, your communication skill. Yeah, this I've read. This I've read. This I've read. Your wife. My See, I'm blessed with two girls in my life, right? Yeah, wife is a very difficult word to use. It's very difficult, very difficult word. Very means very, right? Wife, I'm audible. Just give me the confirmation that I'm audible or not, unless and until I can't speak about my wife, right? You give me the confirmation, yes, Praveen, you're audible, so I can speak. You're actually asking me to speak about someone who is like wife, right? So just type yes in the chat box that Praveen, yes, you are audible. Just type yes first. Yes. Yeah, then I can speak. Yeah, give me yes confirmation. Voice confirmation. How much lag is there? Yaar? Oh my god. Audible is a nice. There's a nice lag. Yeah. There's a nice lag of 6 to 7. Yeah, thanks. Uh, Two girls in my life. One is my mother. Another is her name is Dolly. Two girls. And our relationship is there almost in legal entity, from a legal point of view. Our relationship was there for 18 years. And from an emotional point of view, the way I cannot leave my mother, I cannot leave some other people also in my life. So there are two girls. One taught me discipline, another taught me love. Now don't ask me who taught me discipline or who taught me love. That I will not reveal. That's my personal. That's my absolute personal personal life. That out of two girls which I have in my life, one is mother and another is Dolly, with whom I have spent 18 years from a legal point of view. And the way I cannot leave my mother, I cannot leave few members in my family. These two girls, one taught me love and one taught me discipline. Yeah, you know her name, right? I want to know about your family. Yeah, so Dolly is there, Arnav is there. I remember meeting Dolly when we were 17. Yeah. I remember meeting her when we were 17 and I was in college, 11th standard, uh, Nasik, Panchavti College. And she was from Mumbai. She came from Mumbai. And in those days, Nasik girls were very conservative girls, very conservative girls.
And suddenly I saw one girl wearing black t-shirt and jeans, and tight black t-shirt and jeans, and tight black t-shirt and jeans, tight black t-shirt and jeans also. Right? So at the age, at that age, like if you are 11th standard, is like your hormones are at a nice level, and then you enjoy all this. So I got very inspired by her, and that's the reason the boy who failed in ninth standard, I started studying, and I was number one in college just to keep that hope alive. That she should not say no to me, because the only reason the girls love boys in the college for the good marks, and in the real life for the money. Full stop. Nothing after that. Not a full stop. In the college, the girls like the boys who have good marks, and in the school of life, the girls like the boys if they have money. Full stop. Nothing after that. Nothing after that. After that, everything is a concept. This is the truth, right? So, coming back to her, then in 12th standard, then we did together. Then she came back to Mumbai. I went to Loni, Pravranagar for my pharmacy. I did my pharmacy graduation in pharmacy. So I did that, and then what? Then we came together. She started working in Glaxo as a medical rep. I started working as a medical rep in Sipla. And then there was a period where we have some common geography to cover. And then we started meeting, and then one day suddenly I decided to take this conversation in front of my parents. That hey, now we are what, 24, 25, and now I think she's working, I'm working, and we should both now we should tie the knots. And they said no. I said why? I will tell you one advantage of Instagram. My mom is not there on Instagram, number one, and she doesn't understand English. And I have full guarantee there is no one surrounding her who can explain what I'm speaking in English to her. So whatever I speak in English, there's only one girl now in my life whom I'm answerable to my mother. So whatever I speak in English, I don't care. So the point I'm making was, then at the age of 24, the problem in my marriage was the caste. The caste. Yeah, it's intercaste marriage, and very contrast, very contrast. Very super, super duper contrast. Super duper contrast. But that's how the culture of this country is. It's a caste-based system. I got an opportunity to work with the cabinet minister Lodaji in last 6 months now. I got an opportunity to learn from Bhosle sir, who is the collector. I got an opportunity to work with Gondrekar sir, who has the patent of CNG. I got an opportunity of working with Kulkarni ji, who is the CEO of Bhaskar Energy. Sachitan Siddesh, who is the OSD of Lodaji. So in Himachal, when I started meeting people, I was a different person. But when you meet more and more people, there's a word in Hindi called बहुश्रुत. बहुश्रुत होता है जो किताबों से नहीं पता, मैंने नहीं पता कभी मतलब देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माय कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो मैं बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि यार मैंने तो कभी किताब खरीदी नहीं थी, मतलब नहीं खरीदी तो नहीं खरीदी तो नहीं खरीदी तो नहीं ही खरीदी, नहीं ही खरीदी, मतलब मैंने खरीदी ही नहीं है किताब ये लाइफ में, मतलब मैंने खरीदी ही नहीं है। क्यों? 10th स्टैंडर्ड तक मेरा भाई बड़ा था, तो उसकी सारी किताबें मुझको मिलती थी, सब मिल जाती थी मुझे, मेरे खरीदनी नहीं पड़ी 11th खरीदनी नहीं पड़ी। और कॉलेज में मैंने एक भी किताब नहीं खरीदी, मैंने नहीं खरीदी, मतलब जब मैंने 4 साल के कॉलेज ख़त्म किए तो मैं जब निकला तो मेरे पास में किताबें नहीं थी। होती तो मेरे बैग में होती। मैं बहुत श्रुत हूँ, मुझे लोगों से मिल के सुनना अच्छा लगता, मुझे किताबों से पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ये मेरा सच है। जब अपने साथ आप वक्त गुजारते हो तो अपने सच भी तो पता लगता है ना, दैट्स माई ट्रूथ। क्या क्या टेल मी अबाउट, नहीं तुम अपनी एज बताओ पहले यार मुझे। मैं तेरे सवाल, ये जो तेरे गहरे गहरे सवाल है ना, टेल मी अबाउट योर इंटरकास्ट मैरिज, ये जो तू गहरे गहरे सवाल तुमसे पूछ रहा है ना, आपकी एज बताओ यार मुझे पहले। एज बताओ, आपकी एज कितनी है पहले, चार्ट पे एज लिखो आप। माई आंसर हैज़ टू बी बेस्ड अपॉन योर एज। मैं नहीं चाहता मैं किसी बच्चे को गलत सलाह या किसी बड़े को गलत एडवाइस
नहीं देता, ना सलाह देता, ना सलाह लेता, ना एडवाइस देता, ना लेता। एज बताओ पहले, एज एज क्या? एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत बात की बात होगी। 21। क्या बोलूँ यार, मतलब तो देख ना, मैरिज का कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट है, शादी मत करना। ठीक है, मैंने बड़े बड़े रईसों को शादी करने के बाद में पहाड़ पे आके रोते हुए देखा है। मैरिज एक गलत कॉन्सेप्ट है। भारतीय मैरिज का एक्ट क्या है, लॉ क्या कहता है, समझ लीजिए। अब 21 साल के आप समझ सकते हो, समझदार। 24 साल, 3 साल का मेरा बच्चा था, ठीक है, 24 साल की उम्र में। मेरा बच्चा अभी 19 का है, ठीक है, तो आप मेरे बच्चे से 3 साल बड़े हो। तो मैरिज का एक्ट क्या है, समझो। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, लॉ क्या है, जिस देश में आप रहते हो उस देश का वो आपकी जिम्मेदारी है। तो लॉ ये कहता है कि सतपदी, सतपदी मतलब 7 जन्मों तक, इसलिए 7 फेरे लिए जाते हैं हिंदू एक्ट में, कि 7 जन्मों तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी और दूंगा। ये एक्ट है। क्या है? ये एक्ट है, ये लॉ है। तो ये लॉ ही बना है एजम्पशन पे। 7 जन्म एजम्पशन है कि नहीं है, क्या एजम्पशन नहीं है कि 7 जन्म के ट्रुथ है। तो लॉ कैसे बनता है? लॉ बनता है इन अकॉर्डेंस विथ नेचर। हाँ, आ गया वापस। सो लॉ बनता है नेचर और कल्चर के अकॉर्डेंस में, अकॉर्डेंस में। ठीक है, मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे, आता हूँ मैं उस पे, एथिस्ट वाले और थीस्ट वाले क्वेश्चन पे भी आता हूँ। पहले पहले एक एक करके, एक एक करके। तो सतपति, तो अभी डिवोर्स का एक्ट क्या हुआ फिर? डिवोर्स कैसे होगा फिर, अगर लॉ ही ऐसा बना है? आप एक एग्रीमेंट तोड़ रहे हो ना। लॉ मतलब क्या, एग्रीमेंट हो गया ना, तो आप एग्रीमेंट तोड़ रहे हो। तो डिवोर्स कैसा होता है इंडिया के अंदर? कि आप ऑनलाइन जाएंगे, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन सब करना है, ऑनलाइन 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 सब करना है। उसके बाद में एक वीडियो ओपन होगा, जहाँ पे आपको वीडियो बोलना है कि देखो, मैं भगवान को मद्देनज़र रखते हुए, उसको, भगवान को, जो भी है फिर, भगवान को मद्देनज़र रखते, जो भी एक्स वाई जेड आगे लिखा हुआ है, लेकिन भगवान को मद्देनज़र, कॉन्सेप्ट, अगेन कॉन्सेप्ट है, राइट? सो इंडिया में शादी करना आप है, मुझे मार जैसा काम है। Not everyone is blessed with a girl who understands the sanity of moving peacefully from the relationship. I am the blessed one. Not every man is blessed with a girl who understands the importance of sanity while living the relationship. To fly alone, of course, respectfully, cheerfully, to fly alone. Not everyone. I am the blessed one. Yes, I am. क्या हूँ मैं, एथिस्ट हूँ या नहीं, मुझे नहीं समझ में आते हैं ये वर्ड्स। मुझे एक समझ में आता है, जिसने जिसने भूत देख लिया उसने भगवान भी देख लिया, बिकॉज बोथ हैव द वन वन कॉमन प्रॉपर्टी विच इज which is invisibility. But I don't talk about religion, uh, unless there is a question, of course. But I don't initiate conversations on religion, sex, and politics. I don't love to initiate conversation on sex, politics, or religion. But if there's a question, I don't stop myself in answering myself. I'll just have water in case if you have any questions. 7 words. Nice 7 words question. What is the purpose of marriage? The the purpose of marriage is, it all depends upon the boy and the girl.
One purpose of marriage could be for a boy, one out of many, is that I just need a girl who can serve me food every day. One purpose. Or second purpose, I want a girl who can help me in building my life. Food is okay. The food I can make, but she should help me in building my life. Of course, by going on work or doing some business or going on job or something, and bringing some money. One purpose could be I just need a girl who will take care of my parents. So I don't have to worry about my parents, the girl is there. So you have to define the purpose of your marriage, brother. World can't tell you what is the purpose of your marriage. But before the purpose, there has to be love. If you want to spend time 24, if you are giving access to each other's body to each other in marriage, you give access to each other's body, na yaar. Can you imagine someone is giving access to her or his body to each other? So access that they have become so close, that's marriage na yaar. That's a different thing that out of 10 marriages in India, 7 marriages are not sleeping together. That's the story. That's the truth. Out of 10, 7 marriages in India are not sleeping together. Outside they might pretend that they are the best couple in the planet on the planet Earth. That's a different thing. But that's a story. Yeah. So you have to have two purpose. How to gain the lost? Hey, that's a nice question. Yeah. How to gain the lost confidence? Feels nothing left. Feels like can't do anything. But some. I'll share a story. Yeah. There's a girl called Tina Ashok Dhingra. Tina Ashok Dhingra. If you put on Amazon, I remember meeting her and we were discussing about writing a book. And she said, Praveen, it's my dream to write a book. And then we had a nice conversation and then this and the rest of it. And during the conversation, we also got an opportunity to talk about her husband. And her husband is working in Byju's and we were talking about it. And then suddenly I asked her that, hey, why you guys are not, it's like 4 years or 5 years old marriage, and then why you are not planning for a baby? And she said, Praveen, I'm still healing myself from inside. To become pregnant, I'm still healing myself from inside. मैं अपने आप को heal कर रही हूँ अंदर से. Pregnant बनने से पहले मैं अपने आप को heal करना चाहती हूँ अंदर से. And I said, nice. That's a nice way of looking. सही है यार. And then suddenly when I disappeared in the mountains, came back, I remember meeting or talking to her once in the middle, maybe once. And suddenly she called me yesterday. She sent hi on Instagram. And I called her back because I have her number. And she said, I just got a baby. I said, wow, nice. And she said, what happened to your emotional healing? And she said, Praveen, my one book is already released. Uh, and she has already sold 1,100 copies or 1,000 copies. I have no idea about that, but something like that. And in few countries, of course, because nowadays it's very easy to reach. And we have to explore, we have to leverage all that. And she has written 8 books here. She said 8 books. And I said, मैं लिखते लिखते ही heal हो गई. What why is so nice, yeah. Nice. It's like while writing only she got healed, yeah. So how to gain the lost confidence, yeah? Come to the nature, yeah. Go to the nature, come to the nature. What do you mean by that? Go to the mountains, go to the jungle. Just go to the jungle, go to the mountains. I healed myself only in the nature. People are not the only people, no, not only living on the planet Earth. People are not the only living objects on the planet Earth to whom we have to build relationship. The stars and the moons and the cats and the dogs, water and the sun and the moon. Come on, it's like no, you have to spend time with yourself here. Feels nothing. Happy if you're feeling nothing from inside because end of the day, after surrendering all my possessions, even I feel nothing only. No? I feel zero from inside. But I'm a blissful zero from inside. I'm happy. People feel that I make this, I smoke and I drink, but those people who travel with me, they know what is the reality. Just because my hairs are long, that doesn't mean that I know I've lost my mind. So you have to understand, unless and until you don't spend time with yourself, very difficult to answer these kind of questions because the answer to this kind of questions have to come from inside you, not from outside. Getting my point, Shiv?
The answers have to come from inside now. So when you write it down, or even if you're just talking to yourself, uh, the problem with talking with yourself is like, it's being told in Bollywood that if you're talking with yourself, that's a depiction of madness. Of course, come on, not talking is we are the only animal on the planet who talks here. So world has gone wrong in understanding the whole power of communication. As a student of communication, I have been pursuing communication for almost now 8 9 years. It's like the way the world could leverage the power of music, the way the world could able to leverage the power of dance, the world could not leverage the power of communication. Rather, world misused communication, and the world is at the peak of miscommunication. And the worst part of miscommunication is something, the tool, the communication which is being created by just last 50,000 years is created to communicate something to someone else, but we don't do that. We just communicating with ourselves. We just talk with ourselves. Just talk with ourselves. Just talk with ourselves. It's like two people, one person talking with you. So I've gone through all this. I can understand what you're writing. I can understand how you're going through it. I know I have locked myself in the room for years and for the months in the mountains. I know what you are saying. That you have to meet, brother. You have to meet. You have to meet people. Or come meet me here. You know where I am. I'm in Blue Green Exotica. I'm in Himachal. You know where I am here. Just take my mobile number. Meet. Talk. Do a call here. Do a video call. What stops me here? What stops me? What will if I speak to you, Shiv, for 5 minutes, and in that 5 minutes is helping you to live a better life here? What stops me from doing that call here? And what stops you from asking my number, Praveen? I'll give you a number, Praveen. Can you share your number? I want to talk to you. What stops you? Something is I doesn't say. If I want, I will take now. We stop ourselves, man, just because what people will think and this and that. Love is equal to attraction or not? What is love here? At the age of 21, you think about sex. Love आ जाएगा बाद में तेरा. Get satisfied with sex first. Right? You might get satisfied for love from one girl, but you cannot get as a boy satisfied for sex from one girl. That's the truth of every animal. You're getting my point? Uzair. The truth of every animal is that one girl might give you love for all your life. You will be satisfied with the love. You will be satisfied. But it's impossible, biologically incorrect for a boy to stay satisfied with one girl. No other animal is doing that. It's difficult for Homo sapiens also. Understand this. It's basics of life. What are your thoughts on transgender trans मेडिटेशन मेरे को नहीं समझता है ना, मेरे को योगा समझता है ना, मेरे को मेडिटेशन समझता है, मेरे को समझता है स्ट्रेचिंग ऑफ बॉडी, मेरे को नहीं समझता ये सब चीज़ें, ब्रदर. I've never been to any yoga class. I've never been to any meditation class. I've been to Vipassana once. There's nice learning there. It's a nice little technique and method which can be practiced. But ये meditation, ये yoga, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें यार मेरे को नहीं समझती यार. मेरे को नहीं समझता ये सब चीज़ें. Beyond my understanding. Beyond my understanding, because yoga is highly misunderstood. Yoga is not stretching your body. Highly misunderstood. And it's so misunderstood that there's so many versions now. This it's got so hybrid, so commercialized, and there's so many versions of meditation and so many versions of yoga. Something which has a potential of changing someone's life cannot have so many versions. You get my point? If I cut down everything and come to the point that something which has a potential of changing life like yoga and meditation cannot have so many versions there. So the real version is not being marketed well. The real version of meditation and the real version of yoga, which is again a man-made, right? Anything which is written is created by human beings. We know that, right? Anything which is written, see, the language came in existence just 50,000 years ago. So anything which is written is created by human beings, which is not the nature. Huh? It's our creation. It's like we have not created the trees and the stars and the moons. We have created books, science. So it's created by human being. Anything which is written.
सर ट्रस्ट इश्यूज दैट्स द मोस्ट हॉन्टिंग थिंग। शिव, हाँ ट्रस्ट का देखो, हाउ ओल्ड यू आर शिव? हाउ ओल्ड यू आर? व्हाट्स योर एज शिव? I just type your age, no? Because this answer is based upon your age. 26, yeah. See, शिवा ट्रस्ट इशू है ना, अब मैं बताता हूँ ट्रस्ट इशू मेरे बहुत इशू है ट्रस्ट के। देख, मैंने कई सालों पहले गेम ऑफ ट्रस्ट भी किया था। गेम ऑफ ट्रस्ट मतलब मैं जाता था, घूमता था कि यार आता किसी को ट्रस्ट कर रहा था, कहीं भी चला जाता था, कहीं भी कश्मीर में कहीं भी चला गया था मैं। अंडरस्टैंड यार, बहुत ईजी है समझना, समझ जाएगा आज ही इस वीडियो में ही समझ जाएगा। पहला देख, क्या ट्रस्ट नेचुरल है या अननेचुरल है? ठीक है ना, हाउ डू यू वैलिडेट शिव कि नेचुरल है क्या अननेचुरल है? अगर जानवरों में है तो नेचुरल है, अगर जानवरों में नहीं है मतलब ये अननेचुरल है। तो क्या जानवरों में ट्रस्ट के इश्यूज हैं क्या? है ना? कैसे पता मेरे को? देखेगा तूने आंखों से? जब तक देखा नहीं तब तो विश्वास करने का नहीं है कुछ। जब तक अनलेस एंड अनटिल नॉट सीन, डोंट ट्रस्ट। मैं तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसा ही है, जब तक देखेगा नहीं तब तक ट्रस्ट ही नहीं करेगा। या देखने के बाद नहीं करता मैं ट्रस्ट, तो क्या बात कर रहे हो? देखने के बाद में इफ आई हैव क्यूरियोसिटी आस्क क्वेश्चन देन आई ट्रस्ट। सो व्हाट इज एग्जांपल? मैंने कहाँ देखा है ट्रस्ट के इशू जानवरों में? अगर आप ढाबों पे जाओगे और अगर आपने कुत्ते देख लिया, फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता है ढाबे पे, और आप उसको खिलाने के लिए नीचे बैठते हो, चलो यार मेरे हाथ में रोटी है मैं खिलाता हूँ कुत्ते को। जैसे नीचे बैठेगा ना, कुछ ढाबों के कुत्ते भाग जाएंगे और कुछ ढाबों के कुत्ते आपके पास में आ जाते हैं। अभी कुछ ढाबों के कुत्ते जो आपके पास में आ रहे हैं वो एक्चुअली वो कुत्ते हैं जो दे आर पैम्पर्ड, वो जो लोगों ने तंग नहीं किया उनको, गांव के कुत्ते हैं या फिर अच्छा ढाबा है, वो सराउंडिंग अच्छा है। और कुछ ढाबे के कुत्ते जो भाग जाते हैं वो ऐसे कुत्ते हैं जहाँ पे लोग तंग करते हैं उनको। अभी पत्थर मारने के लिए बंदे को झुकना पड़ेगा ना, तो ये झुका तो उस लगा ट्रस्ट, ट्रस्ट है ना यार, तो ट्रस्ट के इशू कुत्ते में मतलब नेचर है, ठीक है, तो इशू नहीं है ब्रदर। कल सुबह से उठ के हर चीज़ पे तू मतलब मिसट्रस्ट ही करना, ट्रस्ट ही मत करना, मत करो ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि किसी पे आप ट्रस्ट करके ना, आप फिर एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हो। आई हैव ट्रस्टेड माई, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस में हो, आई हैव ट्रस्टेड माई बिजनेस पार्टनर। मोमेंट यू हैव ट्रस्टेड योर बिजनेस पार्टनर, मोमेंट यू हैव डन दैट, अपना एक्सपेक्टेशन बिल्ड किया ना, क्योंकि आपने ट्रस्ट किया तो एक्सपेक्टेशन आ गया। सो ट्रस्ट मत करो यार। हु इज़ आस्किंग यू टू ट्रस्ट? कौन सा कुत्ता ट्रस्ट करता है? कौन सा बिल्ली ट्रस्ट करता है एक दूसरे के ऊपर? कौन सा हाथी एक दूसरे हाथी पे ट्रस्ट करता है? कोई नहीं ट्रस्ट करता एक दूसरे के ऊपर। तो ट्रस्ट नहीं होना नेचुरल है ना यार, उसमें इशू क्या आ गया? सो देन हाउ विल द रिलेशनशिप सर्वाइव? ट्रस्ट नहीं करके ना, वैलिडेशन पे, वैलिडेशन पे ट्रस्ट कर ही मत हो। मतलब तेरे रिलेशनशिप से पूछ ले कि जैसा मैं सोच रहा हूँ मैं सही सोच रहा हूँ क्या है, वैलिडेट कर, कंफर्मेशन ले। एजम्पशन से मत चल ब्रदर। नॉट एवरी एजम्पशन विच यू थिंक दैट आई, मुझे ऐसा लगता है इज़ द राइट थिंग, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने लाइफ में बहुत देखा है ऐसा है कि मैनी रिलेशनशिप आई हैव सीन जस्ट गोइंग इन टू द वेन जस्ट बिकॉज उनको मुझे ऐसा लगा। कॉर्पोरेट में पीपल आर लूजिंग मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ओनली बिकॉज समटाइम्स द मैनेजर्स डोर विल गेट नॉक्ड बाय सबऑर्डिनेट, और दरवाज़ा बंदा खोलता है और मैनेजर बोलता है ये तूने क्या किया? अरे आपने ऐसा तो कहा था। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे ऐसा लगा आपने ऐसा कहा। मुझे ऐसा लगने पे ना दुनिया की लगी पड़ी है। तो रिलेशनशिप में वैलिडेशन डाले हैं। किसी को चाय ऑफर करने से पहले उसको पूछ तो सही कि उसको चाय पसंद है कि नहीं। उसको तो ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर पसंद हो, तेरे को क्या मालूम? तेरे को चाय पसंद होगी, मेरे को थोड़ा ना पसंद है यार, नहीं पसंद है ना चाय। यू हैव टू लव समवन द वे द समवन वांट टू बी लव्ड यार, नॉट द वे यू वांट टू लव समवन ना भाई। यू गेटिंग माय पॉइंट? सर पीपल लाई लाइक एनीथिंग, है ना यार, कहना यार लाई मतलब क्या, बोलने की कला है, जो बोल सकता है सच वो झूठ भी बोलेगा ही, क्यों नहीं बोलेगा? सब बोलते हैं झूठ, सब दुनिया ऐसी ही है, मान ले।
दैट्स द रियल प्रॉब्लम। नहीं नहीं यार, क्या कह, सच्चाई गोली खिला देगा दुनिया को तू? मतलब तू ऐसा बोल रहा है कि मैं जीवन में तभी सुखी हो पाऊंगा जब दुनिया झूठ बोलना बंद कर देगी। क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया है शिव? ऐसा मत कर, जीवन को इतना कठिन मत बना। बोलने देना झूठ यार, झूठ पकड़ना, पकड़ना झूठ, लोगों के झूठ। बी ए इन्वेस्टिगेटर, बी ए, इतना ऑब्जर्वेंट बन कि देख, अरे तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। वॉच द वर्ल्ड द वे यू वॉच नेटफ्लिक्स शिव। 360 डिग्री का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है ब्रदर। सर ऐसे मत उड़ाओ ना हवा में। अरे यार देख शिव यार, मैं हवा में उड़ा, देख यार। हाँ यार देख, मैं से आई एम यूज टू दिस, इतने साल लोग नहीं समझे मेरे को। आप और मैं चैट पे क्या ही समझ लेंगे। या भाई, दैट्स अ सीरियस थिंग, ऐसा ही है। So to be very precise answer to your question, marriage is a concept which is not worth following unless until there's a correction in the law. There has to be a law where there's a defined agreements in the marriage, defined exit policies in the marriage. There has to be a proper respectful exit from the marriage. A girl cannot marry a boy keeping this in mind कि lifetime subscription है। A girl cannot marry a boy keeping this point कि lifetime subscription है मेरा, lifetime subscription मुझे आगे मेरे को मिल गया है पूरा lifetime का। अब मैं इसका ही क्रेडिट कार्ड और इसी का डेबिट कार्ड और इसी का कार्ड और इसी का प्यार और इसी की ये और इसी के बर्थडे और इसी का ये उसी का। गर्ल के लिए सही है यार वो, उसके लिए सी देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन द सिक्योरिटी फॉर अ गर्ल। गर्ल की हो गई, गर्ल की निकल पड़ी, एक लड़की को सही पति मिल गया, उसकी निकल पड़ी अगर सही मिल गया तो। लड़के के लिए मुश्किल है, इसलिए एक्स्ट्रा हर दूसरे घर में दूसरे तो हर दूसरे घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नहीं है क्या? मैंने मेरी ज़िंदगी में मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर इसलिए रहा ना यार कि थॉट जो है ना, बैकग्राउंड थॉट, वो एग्जॉस्ट कर देता है आपको। और चीटिंग एक बैकग्राउंड थॉट है। चीटिंग वो नहीं कि लोग बोल रहे हैं, लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे। देख मेरे पे तो 10 पुलिस केस हो सकते हैं, 100 पुलिस केस हो सकते हैं, वो अलग बात है। आप तो केस तो कोई भी किस पे भी कर ही सकता है ना, उसमें क्या है, वो अलग बात है। उसकी इज्जत है, वो अपना अधिकार है, वो करना ही चाहिए आपको। अगर आपके साथ में गलत हुआ है, आपको लगता है कि आपके साथ में गलत हुआ है और आपके साथ है, क्योंकि जज जो एक सीखा हुआ इंसान है, पढ़ा हुआ इंसान है, वो इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस जो एक पढ़ी लिखी है वो इन्वेस्टिगेट करे और फिर उस पर निर्णय हो, सही बात है, उसमें कोई गलत रहा नहीं, उसमें कोई गलत नहीं लगता मुझे उसमें भी। वो आप एक सर्विसेज यूज़ कर रहे हो सोसाइटी की, एक समाज में आप रहते हो, एक सर्विस यूज़ कर रहे हो। तो मुझे कुछ मतलब ये पहले मुझे डर लगता था बॉलीवुड का पिक्चर देख के कि पुलिस केस हो गया, ये केस हो गया, वो केस हो गया, ऐसा था। तो लेकिन मैंने जब कुछ चीज़ें देखी मेरी लाइफ में कुछ सालों के अंदर लास्ट, तो मैंने सोचा ठीक है यार, अच्छी बात है ये, अच्छा सिस्टम है ये, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सिस्टम की, पुलिस की, जुडिशरी की। हम्म, ऐसा है सर, आपके कुछ रूल्स होंगे से लाइफ के, लाइक सम फंडामेंटल है ना यार, क्या बात कर रहे हैं, अपने बहुत रूल्स है ब्रदर। रूल्स है अपने, है यार, लाइफ रूल्स बहुत बनाया मैंने, मेड माई रूल्स। मैं अपना डायरी लिखा पूरा, बहुत प्यारी डायरी है मेरी, देखी होगी आपने अगर कहीं मेरे रील्स में रहती है यहाँ वहाँ। बहुत कम पोजेशन है मेरे लाइफ में अभी, एक मेरी डायरी, एक मेरा पेन, मेरा एक कीटू करके बैग है 85 लीटर्स का, घर तो रहा नहीं अभी तो, और एक नाइकी का छोटा बैग है मेरा, बहुत प्यारा अर्नव का है वो। तो बहुत कम पोजेशन है मेरे लाइफ की, जैकेट्स बहुत है मेरे पास में, क्योंकि हिमाचल में जैकेट्स लेने ही पड़ते थे, मतलब लेने ही पड़ते थे। तो जैकेट्स बहुत रहेंगे, लेकिन बॉम्बे में जैकेट पहन नहीं सकता। लेकिन अभी मैं मंदनगढ़ में हूँ, ब्लू ग्रीन एक्जॉटिका में। सो एक एल्टीट्यूड क्वेस्ट करके एक कंपनी है, सो आई एम देयर इन दैट कंपनी। सो यहाँ पे वी ऑपरेट्स, अभी हम ओपन कर रहे हैं इसको। फर्स्ट मैं स्पीक एंड ग्रो की जो मेरी कम्युनिटी है उनके लिए ओपन करूँगा, जो मेरी पुरानी कम्युनिटी है उसके लिए ओपन कर रहे हैं पहले। वी आर स्टिल वेटिंग, सब पेपर वर्क इज़ इन द प्रोसेस। तो वो सब हो जाएगा, सब कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कवर हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट रिलीजिंग द टिकट्स, सो यू गाइस कैन कम हियर। टिकट्स भी हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखे हुए हैं, हमने डे डे पिकनिक रखा हुआ है, एंड कॉटेजेस है, सब है यहाँ पे, चिल कर सकते हैं, पहाड़ है, नदियाँ है, सब है। एंड आई लव टू स्पेंड टाइम विद दोज पीपल हु रियली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, ऐसा है। सर आपके कुछ रूल्स, तो एक रूल मेरा ये है कि यार मैं सोता नहीं हूँ ज़्यादा। मैं लाइफ में कम से कम 17 से 18 घंटा काम कर लेता हूँ रोज़, मैं कई दिनों से करता आ रहा हूँ, कई महीने से करता आ रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोता नहीं हूँ, और मैं एक बार सो गया तो मैं 5-6 घंटे तो आराम से सो ही लेता हूँ, लेकिन इतना नहीं।
4 घंटा मतलब एवरेज पकड़ लो आप, तो मैं 4 घंटा सो लेता हूँ एवरेज। सो गया तो फिर सो गया, फिर सुबह उठा ऐसा। मैं बीच में नहीं उठता कभी। तो नींद को मैंने काफ़ी हील किया। मैं वो बच्चा था जिसको नींद ही नहीं आती थी। तो वो नींद को हील किया मैंने के पहाड़ों पे। तो एक रूल ये है कि मेरा कोई टाइम नहीं है सोने का। आई स्लीप व्हेन आई एम स्लीपी। मतलब मुझे अभी अभी नींद आ जाएगी तो मैं बंद करके चले जाऊँगा, सो जाऊँगा। फिर मैं मतलब दूसरा मेरा रूल ये है कि मेरा कोई ब्रेकफास्ट या लंच या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं अभी। मुझे नहीं आता कि मैंने कब ब्रेकफास्ट किया था, कब लंच किया था, बट आई ईट व्हेन आई एम हंग्री यार। लेकिन मैंने हरदम मेरे बैग में खाना रहता ही है, कुछ ना कुछ रहता ही है, फ्रूट्स रहते ही है। तो मेरे कोई भूख मारी नहीं मैंने मेरी। मैं सीखा हूँ, डिसिप्लिन सीखा हूँ खाने का। तीसरा मेरा रूल ये है कि मुझे जैसे ही प्यास लगती है मैं पानी पी लेता हूँ। मैं रुक के पानी पी लेता हूँ। मतलब मैं कभी ऐसा मैं पानी को नहीं डालता कभी। क्योंकि जो प्यास है ना, बहुत कम लोग हैं। जैसे आज सुबह मैं दोपहर में अरने से बात कर रहा था तो मैं उसको बोला था कि यार योर मॉम हैज़ नेवर केप्ट यू हंग्री। तेरे को पता ही नहीं कि भूख क्या है। बच्चों को नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे हो तुमको नहीं पता भूख क्या है, असली भूख क्या है और असली प्यास क्या है। बिकॉज दे आर ऑलवेज ओवर फीडेड एंड दे आर ओवर हाइड्रेटेड। सो मैं वेट करता हूँ असली प्यास का, मैं वेट करता हूँ असली भूख का। मैं इसलिए नहीं खाता कि सुबह 9 बज गए और दोपहर के 2 बज गए और शाम के 8 बज गए। मैं वेट करता हूँ कि भाई मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पी लूँ, तो पानी का मज़ा लूँ और खाना मुझे मैं वेट करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर जैसे भूख लगी तो फिर मैं ये नहीं कि मैं नो वेट ही करता रहूँगा। मैं जहाँ पे भी हूँ फटाक से रुक के खा लूँगा। क्योंकि अभी जब मैंने चलना बंद किया, सो आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट फॉर 3.5 years, वॉकड। बट नाउ वी आर ट्रैवलिंग बाय कार। जो वन पोजीशन आई हैव इन व्हीकल इज़ माई स्कोडा। सो वी आर ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट। अभी 12,000 किलोमीटर तो हो गया होगा, 11 से 12,000 किलोमीटर इन लास्ट 2 ढाई महीने के अंदर। सो आई मेक दिस रूल्स दैट आई ईट व्हेन आई एम हंग्री, आई ड्रिंक व्हेन आई एम थर्स्टी, and I stretch my body because every animal on the planet Earth is stretching their body. So I stretch my body wherever I am. So अगर मैं रोड पे भी हूँ, अगर मुझे बॉडी स्ट्रेच करने का मौका मिल गया, बिकॉज बॉडी स्ट्रेच करने के लिए आपको एक पोल चाहिए होता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट होल्डिंग एनीथिंग, कैन नॉट स्ट्रेच योर बॉडी। So and if you have one pole is enough to stretch your entire muscles, all muscles. So I've learned that, I've started learning it in fact. So वो मैं implement करता रहता हूँ। So and then music is something which I listen to the birds a lot because uh, if you are in jungle, if you are in the mountain, one best option you have, best music you have is the natural music of bird and the water. So I make sure that I'm always with the music, either I'm singing or either I'm listening to the music, and choicefully, of course. When I'm working, not working, then that's absolutely. But silence, music is a nice alternative for silence because sometimes it's very difficult to take silence in your mind, especially when you're talking in your mind. But now it's like it, I've been practicing since years now how to keep the zero here. And it's a nice practice. Repetition, nothing else. सर शॉर्ट होने पे सर आप कुछ रूल्स हम ठीक है बोल सर। शॉर्ट होने में प्रॉब्लम हुआ कभी करियर, लव, रिलेशनशिप एक्सेट्रा में? ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टू बी देयर एवरी डे। रोज़ सुबह उठो नए कॉन्फ्लिक्ट होने चाहिए यार। आई वाज टॉकिंग अबाउट फिलोसफिकल रूल्स। नहीं, कोई फिलोसफी नहीं होती लाइफ में यार। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड। हम जो भी बात कर रहे हैं मात्र 50,000 साल की बच्चों थी। जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी whatever we are talking is just we are talking about last 50,000 years because language अभी आया है। उसके पहले का तो यार मतलब जाने ही दो। मतलब इमेजिन, बहुत ही पोटेंशियल है। इंसानों ने अपने आप को 2% 3% में बांध के रखा है, ऐसे मेरे को लगता है। नो कि इस तरीके से अपने आप को आप लोगों ने, मतलब आप चाहे चाहे ये दुनिया को कह दो कि भाई ये नशेड़ी है और ये है वो है, लेकिन मुझे तो शहर के लोग नशे में ही लगते हैं। अपने पोटेंशियल को इतना इस तरीके से बांध के रखा है ना सबने। और ये कहते हुए कि भाई नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको मिल गया नहीं, इसको मिल गया नहीं, इसका नसीब और उसका नसीब ऐसा नहीं है। अब एक एक बकरे की दुकान में आप जाओगे तो ये थोड़ा ना कहोगे कि ये बकरा अच्छा है, ये बकरा बुरा है, और ये बकरा पोटेंशियल और ये बकरे नसीब बांध वाला था और इस बकरे को ईगो था और इस बकरे को ये था और इस बकरे को वो था। ऐसा कहोगे क्या आप? क्या बात कर रहे हो? बकरा तो बकरा हुआ ना, इंसान तो इंसान हुआ ना यार। तो हर इंसान सेम ही है। अपने आप को बांध के रखा है आप लोगों ने भी, क्या ही बोले। हमें अपने कोई रीज़न ही होगा, आप लोगों ने किया होगा तो भी क्या बोलो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर ही।
चलो, ना मैं अच्छा हूँ बीके वर्मा जी, बस थोड़ी देर बात ही कर रहा था मैं। चलो सर, देन व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ह्यूमन टेन। आप समझिए कि आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो एक ट्रेनेबल एआई है, उसकी एक मेमोरी है, उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इट्स ए ट्रेनेबल एआई। ये एआई है, ये तो बाद में आ गया है, ये हम ही एआई है यार, आप और मैं ये है, हम ही नेचर है। बात कर रहे हैं नहीं, क्या ये है, इट्स नॉट ट्रेनेबल। यूज मसल मेमोरी। आप कार चलाते हो, सोच के चलाते हो कि मैं अभी क्लच मारूंगा, अभी करूंगा, ट्रेनेबल है ना। सचिन तेंदुलकर जी जब सिक्स मारते थे, या फिर विराट कोहली सिक्स मारता है, या कोई भी अभी सिक्स मार रहा है, मैं ही सिक्स मार दूँ, तो क्या मेरी मसल मसल मेमोरी काम कर रही है ना सिक्स मारने के लिए? क्या मैं सोच के मार रहा हूँ हाँ अभी मैं सिक्स मारने वाला हूँ? तो मेमोरी कैप्चर हो रही है, ट्रेनेबल ऑर्गन है आपकी बॉडी में, और क्या ही चाहिए था आपको? इंसान बन गया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? सोने से पहले इतना ही सोच लेना कि मैं इंसान बन गया हूँ यार, इंसान बन के पैदा हुआ हूँ। उससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? ट्रेनेबल ऑर्गन है ना यार। जो ट्रेन करना है कर दो। ट्रेन कर दो सुबह 9 बजे के, सुबह 6 बजे के मेडिटेशन के लिए। 3 4 5 दिन ट्रेन हो जाओ सुबह 6 बजे के मेडिटेशन के लिए, वही तुम्हारा फिर ड्रग्स हो गया। फिर 5वें दिन उठो 8 बजे, अरे मैं परेशान हो गया यार, 6 बजे के मेडिटेशन के लिए नहीं उठा, मैं परेशान हो गया। अरे यार, क्यों बांधते हो अपने आप को जब आपको ये पता है कि सेकंड मिनट कैलेंडर ये दुनिया ने बनाया हुआ है, तो इतना एक दुनिया की बनाई हुई चीज़ पे आपने अपनी लाइफ क्यों बांधी हुई है? मुझे समझ में नहीं आता। ये बेसिक नहीं है क्या यार? ये आप लोगों को नहीं दिखता है क्या कि यार मैं सुबह 9 बजे उठूंगी या 9 बजे उठूंगा, मैं ये 2 घंटे के लिए पूरा लाइफ तुमने टाइम 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 टाइम। यार टाइम मतलब मिनट और सेकंड थोड़ा ना होता है। टाइम मतलब वो नहीं होता है। टाइम मतलब होता है मूवमेंट, स्पेस इन द मूवमेंट यार, वो टाइम होता है ना यार, मूविंग इन द टाइम। इट मीन्स आप मूव कर रहे हो। यू आर, द अर्थ इज रोटेटिंग, रोटेटिंग, और आप भी मूव कर रहे हो, सो यू आर मूविंग इन द टाइम। वो टाइम होता है ना यार। ऐसा मेरे को लगता है, सच का मेरे को मालूम नहीं, मेरा सच यही है। सेकंड मैं क्या करूँ यार, सेकंड और मिनट से तुम्हारा यार। हर रोज वही आ जाता है यार, हर रोज सुबह का 9 बज के। ऐसा होता है कि हर रोज से भी आज ऐसा होता है क्या कि हर रोज सुबह से भी हो जाता है? नया, एवरी एनिमल ऑन द प्लेनेट अर्थ इज लिविंग अ डिफरेंट लाइफ एवरी डे यार। हर जानवर अलग जी रहा है, इंसान यार उसी क्या है यार। मुझे नहीं समझ में आता यार ये सब तुम्हारा। रहो तुम, हम जंगल में ठीक है ब्रदर। जंगल ये है सही जगह रहने के लिए। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द लव। सर आप चीज़ों को बहुत इजीली, सर आप चीज़ों को बहुत इजी वे में सबको समझा देते हो। आई थिंक मैं, आई लव एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे अच्छा लगता है। हम ऑफिशियल मेंटर इन आईआईटी रुड़की इन एंटरप्रेन्योरशिप टाइट पैनल पे। जब भी मुझे मौका मिलता है स्टूडेंट्स को टू शेयर माय लर्निंग्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, मैं उनको ये बोलता हूँ कि तुम्हारी पिच जो है, अगर एक 7 साल का 8 साल का लड़का सुन के समझ ना पाए तो वो पिच नहीं हुई। इफ़ अ 7 years old cannot understand your business plan, then that's not a business plan. सिंप्लिसिटी में ही लाइफ है ना सर। जितना सिंपल रहेंगे उतना ही अच्छा, मतलब क्या ही लेके जाए वो कि जाओगे जो लेके आए हो। अरे अकेले ही निकले थे, अकेले ही जाना है जहाँ पे भी जाना है, मतलब 1,500 2,000 साल तो हो गए मुझे जीते जीते लेकिन अकेले ही निकले, अकेले ही जाना है सर। क्या है, क्या ही मतलब, क्या ही सोच के कॉम्प्लेक्स करनी है चीज़ें। कॉम्प्लेक्सिटी तो ईगो हो गया ना, मतलब टीचर ने जानबूझ के बताया या किसी ने जानबूझ के बताया कि ये इतना डिफ़िकल्ट है ना। कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो जानबूझ के बताते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ताकि जब जब वो पढ़ाए तो उनको लगे कि देखो कितना डिफ़िकल्ट पढ़ा रहा होगा ना। और वो उसको ये लगे कि देखो बच्चे सोच रहे होंगे अभी कि देखो ये टीचर कितना डिफ़िकल्ट, कितना अच्छा पढ़ा लेता है, इतना डिफ़िकल्ट। यही सब तो चल रहा है सर, क्या चल रहा है सर, अब देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। हर कोई ने अपनी एक इमेज बनाई हुई है और दुनिया को बताना चाहता है कि मेरी इमेज ऐसी है, बस अपनी इमेज को बचाने में लगा हुआ है। तो क्या इमेज है सर, वी ऑल आर एनिमल्स। कोई फ़र्क है क्या सर? वैसे ही सांस है, वैसे ही खाना खाते हैं, वैसे ही पचाते हैं, सब है। वैसा ही यूरिन है, वैसे ही क्या है सर? अलग थोड़ा ना जानवरों से, सेम ही है। सिर्फ ये लैंग्वेज आ गई है तो थोड़ा कल्चर आ गया है, थोड़ा सा सोसाइटी बन गया है, रिसोर्सेस आ गए हैं।
लेकिन ऐसा है, नहीं बोले और क्या बोले। हम्म, चलो गाइस निकलते हैं, आराम करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। मैं तो बहुत सालों के बाद यूट्यूब पे लाइव आया हूँ। स्ट्रीम यार्ड से मैंने काफ़ी भेजा, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा आ रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ। हाँ चलो, गुड नाइट शिव यार, चलो थैंक्स थैंक्स फॉर टाइम यार, चलो गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। 1 घंटा हो गया यार बात करते करते, क्या बात है यार। 56, बाप रे 1 घंटा क्या आया। शुभ, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ यार, आई एम लाइव ऑन यूट्यूब ऑन 1 आवर। मैं कब किया था ऐसा लाइफ में यार? 5-6 साल पहले किया होगा कभी। हाँ चलो यार, बाय गाइस।